हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिटोरियल सीरीज, जहां पर हम सभी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिकोड करेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। एंड ये जो लेक्चर होगा ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को यूज किया जाएगा इस लेक्चर में। Okay, so welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are starting this very important lecture series, the editorial lecture series for your mains examination. UP is targeting the UPSC CSE mains examination. Okay, now this lecture series will be bilingual in language, that is both Hindi and English will be used, and this will be in handmade notes format, so that you can take down the notes and you can learn the art of note making as well. Okay, so the first editorial that we are picking up without doing any delay is this one: a state, a clean sweep, and the art of sanitation. Now this article is talking about the commendable progress which has been made by Madhya Pradesh in implementing the Swachh Bharat Abhiyan. स्वच्छ भारत अभियान जो था 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अनाउंस किया था, ठीक है। और ये महात्मा गांधी जी की जो विजन थी ना कि उनको एक क्लीन स्वच्छ कंट्री चाहिए थी, उस विजन के मद्देनजर हमने ये अभियान लॉन्च किया था। And keeping in sight of this particular abhiyan or this vision of this Clean India mission, Madhya Pradesh has progressively implemented, successfully progressed in implementing the Clean India mission. This is the article all about. So it comes under GS paper 2 because here we are talking about the governance, the administration, how they were able to implement this mission successfully. यहाँ पर हम GS पेपर 2 की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में गवर्नेंस का पेपर होता है मेंस में। Okay, and in the governance paper they talk about the how the government undertakes the implementation part, how the executive implements the laws and legislations that they are framing. Okay, so here it was on October 2, 2014 that Prime Minister Modi, newly elected, launched a nationwide cleanliness campaign on the occasion of Mahatma Gandhi ji's birth anniversary. So first important point you learnt over here is that October 2, 2014 was the date and the year when this क्लीन इंडिया मिशन और स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 फॉर प्रीलिम्स यू हैव टू रिमेंबर एंड फॉर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो आंसर राइटिंग में ना कंटेंट यू गेट फ्रॉम द एडिटोरियल्स ओनली, सो इफ यू रीड द एडिटोरियल ना fully completely analytically, then only you will be in a confident position to write answers. Okay, so first important thing, it was on October 2, 2014 and also through editorials you learn the art of writing. editorials के थ्रू आप सीखते हो कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, कैसे अपने व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। These articles help you to present your viewpoints. So it was on October 2 to 2014 that Swachh Bharat Abhiyan or nationwide cleanliness campaign was launched on Mahatma Gandhi ji's birth anniversary. Okay, now this particular abhiyan was launched and that the state governments had the responsibility to implement them. Nationwide हमने अभियान तो लॉन्च कर दिया, बट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मशीनरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस तरीके से चलाना था कि इस अभियान को इम्प्लीमेंट किया जा सके। So first thing about Swachh Bharat Abhiyan launched on 2014 and the vision is Clean India Mission. Swachh Bharat Abhiyan is also known as SBA and remember that this abhiyan is launched for two areas, rural and urban. दो areas के लिए ये अभियान लॉन्च होता है, rural areas and urban areas. Okay, so in a state there are two kind of areas ना, rural भी होता है and urban भी part होता है state का। For example, in Madhya Pradesh we have urban Madhya Pradesh and rural Madhya Pradesh also, right? So here the abhiyan was launched on 2014 and the vision of the aim of the abhiyan was to provide every family over here, see, to provide every family with all the best sanitation facilities including the toilets and solid and liquid waste disposal systems. Okay, तो ये एम था, दिस वॉज द एम ऑफ द मिशन। थ्रू दीज काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड टाइनी डायग्राम्स ना यू कैन कंसाइसली मेक नोट्स इन अ वेरी बेटर मैनर एंड यू कैन इजीली रिवाइज देम। इस तरीके से अगर आप शॉर्ट में नोट्स बनाते हो तो रिवीजन में इजी हो जाता है, ठीक है। नाउ टू कॉल टू अचीव द गोल बाय अक्टूबर 2019 and make this an appropriate tribute to Mahatma Gandhi ji, that who is the father of the nation. This call was well received by Indian citizens and even the international community appreciated our step towards the Clean India mission. Now, when we talk about Madhya Pradesh government, they followed a very comprehensive and a very scientific approach when it comes to implementing Swachh Bharat Abhiyan.
स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक बहुत साइंटिफिक और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉलो किया. वी विल डिस्कस दैट अप्रोच ऑल्सो. ओके, so some important pointers for prelims, that the urban Madhya Pradesh, MP means Madhya Pradesh, they received their open defecation free certificate on October 2, 2017. And the rural Madhya Pradesh received their open defecation free certificate on 2018. That means now people are not defecating openly. Okay, अब खुले में कोई शौच नहीं कर रहा है. And Madhya Pradesh is now the third state in India which when it comes to the cleanliness survey 2020. As of today Madhya Pradesh ranks third in the country in the cleanliness survey. जो cleanliness survey हुआ है ना 2020 का, उसमें मध्य प्रदेश थर्ड स्टेट है कंट्री में, जो इस टॉप 3 में आता है, टॉप थर्ड में आता है. ठीक है. And Indore has been tagged as the cleanest city in the country in the Swachh Sarvekshan. Swachh Sarvekshan means the cleanliness survekshan of 2021. It is also India's first water plus city. Now the question can come in interview and in prelims. What is a water plus city? Water plus city is a city which treats its wastewater to a very satisfactory level before releasing it into rivers. जो भी पानी का ड्रेनेज इनका इकट्ठा होता है उसको ट्रीट किया जाता है. उसके बाद जब वो सेटिस्फैक्टरी लेवल आ जाता है कि इसके अंदर अब कुछ गंदगी या कुछ टॉक्सिक वेस्ट नहीं बचा, तब उस पानी को रिवर में रिलीज किया जाता है. ठीक है. तो दैट इज द वाटर प्लस सिटी. प्लीज राइट इट डाउन. इसको लिख, ट्रीटिंग वेस्ट वाटर टू अ सेटिस्फैक्टरी लेवल बिफोर releasing it into the rivers. यहाँ पर स्पेस नहीं है, so you write it down before releasing it into rivers. Okay. And the capital city of Bhopal, it is now the cleanest and the greenest capital of the country in the cleanliness survey of 2020. Okay, so these are the important basic facts that we have taken from this article. Now coming towards the next important point, how they implemented this particular mission. किस तरीके से, what formula was used, what approach was used. This article has been written by शिवराज सिंह चौहान जी. ठीक है. तो एमपी के खुद एडमिनिस्ट्रेटर इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है. How they were able to achieve this feat. Okay. You all know about UPSC CSE Combat that is launched every Sunday at 11 AM. हर संडे 11 बजे सुबह मॉर्निंग में ये UPSC CSE का ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च होता है. You know about that, right? Now we are releasing the names of those students who have bagged all India ranks in UPSC CSE 2020 examinations, and they were also rankers in the Unacademy Combat scholarships. Unacademy की scholarship combat जो हम रिलीज करते हैं हर संडे को, उसमें भी इनकी रैंक आई थी, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया करते थे, और UPSC 2020 में भी इनकी रैंक आई है. We have Abhishek Shukla sir, all India rank 50, and Shreya Shashank sir, all India rank 151. They were also the Unacademy rank combat rankers. ये 2020 में जो हमने combat लॉन्च किए थे स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. सो दीज टेस्ट हेल्प देम टू होन देयर प्रीलिम्स आंसर्स, गिविंग स्किल्स. So UPSC CSE Combat is the Unacademy Combat Scholarship which is launched every Sunday. This Sunday also on 3rd October we are having our Unacademy Combat, the UPSC CSE Combat at 11 AM in the morning. The best thing about this combat is that it is free scholarship test है. Second important point is that it is all India rank, you will get your all India ranks. तो पहला है कि free होंगे यहाँ पर. ठीक है. combat free scholarship test है. Secondly you will get your all India rank. Thirdly you will get scholarship. अगर आप top 500 में आते हो तो आपको scholarship जीतने का चांस मिलेगा. And this Sunday it will be conducted at 11 AM in the morning and it will be geography based. इस संडे को हमने ज्योग्राफी थीम रखी है. ठीक है. सो द लिंक टू इनरोल इन दिस कॉम्बैट इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लस ये ना एक 1 आवर का टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. एंड यू विल गेट वीडियो सोल्यूशंस आल्सो फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी आफ्टर यू गिव दिस कॉम्बैट. आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे ताकि आपको समझ आए आपने कहाँ क्या गलती करी है. यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन अप टू 100% स्कॉलरशिप. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्लस मॉक टेस्ट एक तरीके का है, तो दे दो इस मॉक टेस्ट को, क्या जा रहा है देने में, राइट. You will know where you stand right now. Okay. And plus all India rankings हर संडे को जब मिलती है तो एक बूस्ट मिलता है. Whatever you have studied within the whole week, you get a boost by getting your all India rank also.
Okay, so give this test. What you have to do is download the Unacademy learning app, click on the link given below. Unacademy Combat का link नीचे description box में दिया है. Use the invite code Arpita10 if they ask you for it. अगर आपसे पूछते हैं invite code तो ये use करना Arpita10 and enroll. And Sunday को 11 बजे live test होगा तो इसको देना मत भूलना. ठीक है, it will be a live test. Only then you will be eligible for the scholarship. So live test है, फटाफट से दे देना. Okay. So what was the formula taken by the MP government in order to achieve this success? First was that the comprehensive exercise was initiated to identify the sanitation issues that people were facing. And how these sanitation issues were identified? By interacting with people and various other stakeholders. ओके लोगों से बातचीत करके, अलग अलग म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से बातचीत करके ये पता लगाया गया कि क्या सैनिटेशन इश्यूज हैं जो लोग फेस करते हैं डे टू डे बेसिस पे. सेकेंड, आफ्टर दिस मीटिंग इनसाइट्स वर गैदर्ड सो द स्ट्रैटेजी कुड बी फॉर्म्ड. मध्य प्रदेश को 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बनाने के लिए जो एविडेंसेस और जो बातचीत हुई उस सबको डेटा को गैदर किया गया. ठीक है. एंड देन थर्ड वॉज cleanliness was made an individual's responsibility. Now remember, whenever you become an IAS officer or an IPS or IRS officer, you need to focus on people's participation. The more you include people in your implementation process, the more success you will achieve. जितना ज्यादा आप लोगों को इंक्लूड करोगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में उतना सक्सेस आपको मिलेगा. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर लॉन्चिंग एनी एक्ट और बिल और पॉलिसी, यू कैन नॉट अचीव इट सक्सेसफुली इफ पीपल आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन इट. अब मान लो आपने तो ऐलान कर दिया कि स्वच्छता हम फॉलो करेंगे, लोग कूड़ा कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा? आपने तो एक्ट्स और बिल्स निकाल दिए, लोग तो नहीं मान रहे. तो पीपल पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट. Okay, so Swachhata or cleanliness was made an individual's responsibility both at the personal level and the public level. Fourth step was a multi-pronged strategy was formed. In this strategy, the government constructed the toilets, implemented tough measures. For example, if people were openly defecating, they were being penalized. अगर मान लो कि लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, तो उनको फाइन्स देने पड़ते थे, पेनलाइज किया जाता था. एंड गवर्नमेंट इंकरेज्ड बिहेवियरल चेंज थ्रू इनोवेशन. इनोवेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने चेंजेस लोगों में लाना शुरू किया. इनोवेशन मीन्स अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग रिवॉर्ड्स दिए जाते थे लोगों को ताकि लोग क्लीनलीनेस मिशन में पार्टिसिपेट करें. This approach guaranteed the sustenance of changed behavior and longevity of the impact of the efforts which were taken by the government. Plus, good leadership is also important. Good leadership जरूरी है अगर आपको behavior में change लाना है लोगों के. You cannot pressurize people to change their behavior. You cannot hit them. You cannot punish them if you want them to change their behavior. What you can do is change your leadership style. Good leadership encourages a sustained change of behavior. So that is why the MP government focused on the collector, ठीक है, the behavior of the collector, local level leader, write it down, local level leader, okay, and at Gram Panchayat level also they started rewarding them if they used to achieve any small success. कोई भी small level पे success achieve करते थे ना तो कलेक्टर को, local level leader को, ग्राम पंचायत level पे जो leaders है उनको reward दिया जाता था. So at each and every level people were being rewarded. So over here you can see at every level people were rewarded. So what followed was a remarkable change in the attitude of people because they started to own the movement. अब लोगों को ये नहीं लगने लगा कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया है, लोगों को लगने लगा ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So what MP government did, they shifted the focus on the act, from the act to the personal responsibility of the people to ensure that their area or their surrounding is clean. अब लोगों को लगने लगा ये तो हमारा अपना मूवमेंट है, ये गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च किया, ये तो अपना मूवमेंट है, ये तो हमें करना ही चाहिए. दिस इज फॉर अस, दिस इज अस. So the approach of MP was providing holistic sanitation facilities to the people of Madhya Pradesh, ठीक है, and it came from understanding of traveling and interacting with numerous people and observing and learning from their struggles, and accordingly innovating different rewards and different systems and in order to make this movement a success.
So the collective effort of citizens, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को हम वाहवाही नहीं देंगे. There was the collective effort of citizens of Madhya Pradesh and the state machinery, that is the administrative machinery of the state, to bring about this irreversible change in the cleanliness mission, irreversible positive transformation in sanitation. And this was, they used to target the grassroots levels. उन्होंने grassroots level पर जाके target किया हर एक चीज को. So I hope now you understood the entire gist of this article. अब आपको समझ आया? So that is why reading editorials is important. You get so many things from one single editorial. एक editorial से आपको administration के बारे में कितना कुछ सीखने को मिलता है. And that is how you can frame your own content, your own answer writing content. Okay? So this is the importance of editorial reading. I hope आपको समझ आया आज का editorial. If you enjoyed it, do let me know in the comment section. Okay?